Okay, so this is your third experiment first program, and here we will be talking about object-oriented programming in Python. ठीक है? और यहाँ पर basically we'll see whatever we have discussed in the morning, that how do we define the class, how do we make use of class, how do you define the methods in the class. Now for this, we can work on any class. We can work on student class, we can work on employee class, we can work on vehicle class or book class, as per our requirement, as per our choice. In the morning, we were working on employee class. We want to continue with that. Employee के ऊपर ही हम काम करें. Yes, am I audible? Yes, sir. Okay, sir. Okay, so I make up one class, employee. Achha, in Python, if you don't want to keep anything inside your block, this is your block, right? So here starts my block. So I can make use of a keyword called pass. It is something like pass. Pass कर दो ना, अगर आपको कोई चीज नहीं आती है, कुछ अगर आपको doubt है, तो what do? We pass it. So in the same way in Python also, कोई आपको block खाली रखना है, मतलब if you किसी loop का block हो या किसी function का block हो, class का block हो, anything, so you can simply pass it. So you can make use of this pass keyword. तो ये पास कीवर्ड खाली मैंने इसके लिए रखा है कि हम लोग अभी क्लास को खाली रखते, फर्स्ट विल कंप्लीट द मेन पार्ट एंड देन विल गो बैक टू अवर क्लास. सो व्हाट आई मीन टू से कि हम लोग एक मेन फंक्शन बनाएंगे हमारा, जिसके अंदर हमको अपनी पूरी ड्राइवर कोड को अपने रखना है. सो आई विल से क्या हियर स्टैंड्स माय ड्राइवर कोड, और ये ड्राइवर कोड के अंदर हमने क्लास को यूज करना है, क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है और उसके डिफरेंट मेथड्स को कॉल करना है. फाइन, अब मैं इसको भी पास कर देता हूँ फॉर टाइम भी. एंड देन एज वी हैव डिस्कस्ड कि अभी आपने मेन फंक्शन, मेन मेथड को डिफाइन किया, और मेन मेथड के अंदर आपने आपका ड्राइवर कोड रखा है जहाँ से आपको एग्जीक्यूशन बेसिकली स्टार्ट करना है. सो अनलेस एंड अंटिल यू कॉल अ मेथड, द मेथड विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. मेथड को खाली डिफाइन करने से मेथड एग्जीक्यूट नहीं होता, मेथड को कॉल करना पड़ता है. ठीक है, तो हियर विल बी कॉलिंग द मेथड. Now when we call our method like this, we say that do not call it simply, call it conditional. अब हमारी कंडीशन क्या है? डंडर नेम इक्वल्स डबल इक्वल्स डंडर मेन. अगर फंक्शन, अगर ये प्रोग्राम खुद एग्जीक्यूट हुआ है तभी जाके हमें मेन मेथड को कॉल करना है, अदरवाइज वी विल नॉट बी कॉलिंग द मेन मेथड. आई रिपीट, अगर प्रोग्राम खुद एग्जीक्यूट हुआ है, कहीं पे इंपोर्ट नहीं हुआ है, खुद एग्जीक्यूट हुआ है, तो ही हम मेन मेथड को एग्जीक्यूट करेंगे, तो ही हम मेन मेथड को कॉल करेंगे. अगर प्रोग्राम खुद एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, किसी और प्रोग्राम में इंपोर्ट हो रहा है, तो वहां पर हमें इसे एग्जीक्यूट नहीं करना है, खाली उन्हें हमें इंपोर्ट करना है. तो दैट टाइम दिस मेन मेथड विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड. सो दैट इज द आइडिया. तो उसके लिए कंडीशन क्या है हमारी? इफ डंडर नेम इक्वल्स in double quotes then the main, then only we'll be calling the main method. Now come back to our employee class. So employee class में हम आ जाएंगे, और जो चीजें हमें employee class में लगनी है वो सब चीजें हम यहाँ पर ले सकते हैं, attributes of our employee class. One more thing is there कि कोई भी class हो या आपका कोई method हो, तो उसमें क्या है कि किसी भी method की, किसी भी function की अगर आपको help देनी है या किसी भी क्लास की आपको हेल्प देनी है, विच इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्शन. फॉर एग्जांपल, व्हाट आई मीन टू से दैट इफ आई राइट से इनपुट, फाइन, सो इफ आई राइट प्रिंट, where you can see the moment मैंने प्रिंट टाइप किया और फिर उसके बाद में मैंने अपने ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस डाले, पैरेंथेसिस डाले, सॉरी, तो मुझे उसकी हेल्प यहाँ पर मिल रही है. ठीक है, प्रिंट मेथड करता क्या है? प्रिंट्स द वैल्यूज टू अ स्ट्रीम और टू sys dot std out by default. Optional keyword arguments are this and so on.
Fine. Now this is called as a help, and technically it is called as a doc string. What it is called as a doc string. Let me write here. Doc string. ठीक है? This doc string stands for documentation string. Documentation string. अब किसी भी क्लास की डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग या किसी भी फंक्शन की डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग बेसिकली हमको मिलती कहाँ से? फॉर एग्जांपल इफ आई राइट इंट, सो आई एम गेटिंग दिस हेल्प. ओके, अब इंट लिखने के बाद में मुझे हेल्प मिल रही है, मुझे ये जो कंटेंट जो मिल रहा है जो कि इंट के बारे में बता रहा है कि भाई ये इंट क्या है. सो दिस कंटेंट इज कॉल्ड एज अ डॉक स्ट्रिंग और द डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग. फाइन. अब ये मिलती कहाँ से पाइथन को डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग? What Python says that whenever you define your method, whenever you define your class, so you include the doc string in the definition. Then whenever the help is required, so I will be showing the doc string which you have written. उसका तरीका क्या है कि whenever you define any method or whenever you define any class, तो उसके definition में सबसे पहले जो आपको डालना है वो doc string डालना है. And the doc string is inserted in the form of multi-line constant string. I repeat, doc string is inserted in the form of multi-line constant string. तो अगर मैं यहाँ पर मेन मेथड पे आऊँ तो यहाँ पर मुझे मेन मेथड पे कर्सर लेके आने के बाद में कुछ दिख नहीं रहा है, खाली इतना मालूम पड़ रहा है हेल्प इतनी आ रही है मेन इज अ फंक्शन दैट रिटर्न्स नन. ठीक है. अब अगर मैं यहाँ पर डॉक स्ट्रिंग डालता हूँ इन द फॉर्म ऑफ अ मल्टी लाइन कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग, ये क्या है हमारी मल्टी लाइन कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग है. और इसमें मैं डालता हूँ माई मेन फंक्शन और आवर मेन फंक्शन, our main function of exp301 having a driver code. ठीक है, इसको मैं मल्टी लाइन भी रख सकता हूँ, इट्स अप टू मी. तो जैसे मैंने डॉक्ट्रिन डिफाइन कर दिया एंड इफ आई होवर माय माउस नाउ सी द डिफरेंस. अब जैसे मैंने अपना माउस लेके आया मेन के ऊपर, so I am getting this help. Our main function of exp301 having a driver code. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक सिंपल सी चीज है लेकिन बहुत ही ज्यादा हैंडी और बहुत ही ज्यादा यूजफुल है. और ये कब ज्यादा यूजफुल होती है? जब हमारा प्रोग्राम या हमारी लाइब्रेरी कहीं और इंपोर्ट हो रही है, हमारा पैकेज कहीं और इंपोर्ट हो रहा है, कहीं और यूज हो रहा है. सो इन दैट केस दैट बिकम्स वेरी हैंडी. तो आप जब भी अपना मेथड डिफाइन करो, फंक्शन डिफाइन करो, तो उसके अंदर सबसे पहले डॉक स्ट्रिंग डाल दो क्या भाई ये मेथड कर क्या रहा है, ये मेथड का काम क्या है. लाइकवाइज अगर आपकी क्लास है तो क्लास के अंदर आप डॉक स्ट्रिंग डाल दो. डॉक स्ट्रिंग डालने का एकदम सिंपल अप्रोच है. आपको सबसे पहले डॉक स्ट्रिंग ही रखना है डेफिनेशन में, क्लास का डेफिनेशन हो या फंक्शन का डेफिनेशन हो, तो सबसे पहले आपको डॉक स्ट्रिंग रखना है. और डॉक स्ट्रिंग कैसे रखी जाती है? मल्टी लाइन कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग. और मल्टी लाइन कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग हम कैसे डालते हैं? ट्रिपल कोट्स, या तो सिंगल ट्रिपल कोट्स या तो डबल ट्रिपल कोट्स, और वो ट्रिपल कोट्स के बीच में आप जो भी लिखते हो दैट बिकम्स अ मल्टी लाइन कॉन्स्टेंट स्ट्रिंग. नाउ my VS code might be configured like that कि मैं जैसे माउस होवर करता हूँ तो यहाँ पर मुझे हेल्प दिख जाती है. हो सकता है किसी के VS कोड में ना दिखे या किसी के स्पेसिफिक व्हाट यू से ID में ना दिखे. So in that case what you can do, you can even display. So I would say print name of the function, that is main, and then dot, and then I would say dunder doc. Let me check. So as you can see क्या हो रहा है यहाँ पर,
हमारी जो डॉक स्ट्रिंग है वो डिस्प्ले हो जाएगी। तो अवर मेन फंक्शन ऑफ EXP301 हैविंग अ ड्राइवर कोड। तो अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन की या किसी भी स्पेसिफिक क्लास की डॉक स्ट्रिंग चाहिए, सो देयर इज यू कैन से अ कीवर्ड और एन एट्रीब्यूट, सिस्टम एट्रीब्यूट कॉल्ड डंडर डॉक। क्या है? डंडर डॉक। तो फंक्शन का नाम लिखो, फिर डॉट ऑपरेटर डालो और फिर डंडर डॉक डालो, या क्लास का नाम लिखो, डॉट ऑपरेटर डालो, डंडर डॉक। ठीक है। अगर उसकी डॉक स्ट्रिंग डिफाइन है तो उसकी डॉक स्ट्रिंग डिस्प्ले हो जाएगी प्रिंट से। अगर उसकी डॉक स्ट्रिंग डिफाइन नहीं है तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। So for any reason, if you do not get the docstring this way, अगर आपको माउस होवर करने पे docstring नहीं मिलती है, so this is a traditional way of displaying the docstring. So there you can come to know कि भाई फंक्शन क्या काम कर रहा है, फंक्शन का काम क्या है, या क्लास का क्या काम है, क्लास की है ये। फाइन। व्हाट आई डू, मैं अपने एम्प्लॉय में सबसे पहले docstring डालता हूँ, and I say that this is an employee class and employee class having employee attributes like employee number, employee name। जो चीजें है वो सब मैं लिस्ट आउट कर सकता हूँ। मैं इसको मल्टी लाइन भी रख सकता हूँ। एंड सैलरी अब इतना ही लिखता हूँ, और फिर नेक्स्ट लाइन में इट ऑल्सो हैज मेथड्स like set prop, then display, etc। ठीक है। जो चीजें मुझे डालनी है, आई कैन पुट इन ऑल थिंग्स एंड देन आई कैन कम आउट ऑफ माय कांस्टेंट स्ट्रिंग। तो नाउ आई एम इनटू माय क्लास, और यहाँ पर मैं अपने एट्रीब्यूट्स यहाँ पर इनिशियलाइज कर सकता हूँ। तो आई कैन से एम्प्लॉय नंबर इक्वल्स टू 0 or equals to none। None is a good option। Name, ename equals to none। None is something like your null, but it is applicable to all types। वो सभी types के लिए applicable होता है। मॉर्निंग में आपने ध्यान दिया होगा, हमने एम्प्लॉय नंबर को 0 से इनिशियलाइज किया था। दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि आप किसी वैल्यू से इनिशियलाइज करो। सो इट शुड बी ऑलवेज एम्प्टी। ठीक है। तो हमने यहाँ पर समझो एक तरह से एम्प्टी से उसको इनिशियलाइज किया है। तो ये एम्प्टी नंबर इक्वल्स टू नन ही है, ई नेम इक्वल्स टू नन, एंड देन सैलरी इक्वल्स टू नन। आई कैन से department equals to none again, location equals to none। So this becomes the attributes of my class, and so I can say these are my class attributes। Class attributes। ठीक है। And then I need to have my methods, some methods। So I would go for def keyword, and I need to set the property। So let me call it set prop। The first argument is always the reference of the object or reference to the object which is invoking this method। तो हम उसको रिफर करेंगे सेल्फ से। सेकेंड इज सपोज माय EMP नंबर। थर्ड इज द नेम, देन salary, then department, and then finally location। Then I need to set them। So self dot ename, e number, sorry, employee number equals to num, then self dot ename equals to name, then self dot cell equals to cell, self dot department equals to department, and finally self dot location। Fine. So we have defined a method to set the properties। Now you can define
a method to get the properties instead of display. ठीक है, और by default उसको एक self जाएगा. I don't need anything else. I can return multiple values as we all know. So I would return self dot employee number, then self dot key name, then comma self dot salary, comma self dot department, comma self dot location. So this many things I would be returning from this function. ठीक है, that's fine. Let's move ahead. ये जो पास है इसको हम निकाल देते हैं. And then we have the driver code in our main method. Main method के अंदर हमें इसके object declare करना है, उसे use करना है. So here I will remove this and I would say E equals to employee, and then I would set the properties E dot set prop employee number 1, comma name Sachin, then employee salary say 30,000, then department say computer, and then location say Mumbai. Fine. So we have set the properties, and to get the properties I need to write E dot get prop, but this will return the collection of values. So let me directly print them. So I would say print. Let's see how does it get printed. And then यहाँ पर हम ये काम करें. Fine. So as you can see, पहले हमारी जो doc string है वो डिस्प्ले हुई मेन मेथड की. फिर मेन मेथड के अंदर क्या हमने किया था, हमने एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हमने इसकी प्रॉपर्टीज को सेट किया, और फिर हमने उसकी गेट प्रॉप मेथड को कॉल किया और हमने प्रिंट किया. जब हमने गेट प्रॉप मेथड को कॉल किया और जो प्रिंट किया, तो एज वी कैन सी हियर, what we can see that the collection of values are returned to us. Collection of values are returned to us on the get prop. तो get prop का आप रिटर्न स्टेटमेंट देखो, self dot emp number, comma self dot ename, comma self dot sell, comma self dot dept, comma self dot log. ठीक है. So this collection is getting returned. Now can you tell me how this is getting displayed? ये जब डिस्प्ले हुआ तो कैसे डिस्प्ले हुआ? Can you tell me कि the collection है, हाँ क्या है? Tuple है ना सब. Good, very good. It is getting displayed as a tuple. See that carefully, it is getting displayed as a tuple. For example, if I go for this, I get this. I put it here and I say result equals to this. I simply now display the result. And I also display the type of it. So as you can see, कि जो हमने रिटर्न किया रेस्ट में वो पूरा यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, और फिर जब हमने उसका टाइप डिस्प्ले किया तो इट इज टपल. सो जो कलेक्शन जो रिटर्न हो रहा है फंक्शन से, जब भी किसी भी फंक्शन से आप मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करो, तो आप अभी हमेशा से याद रखो कि वो मल्टीपल वैल्यूज का एक सिंगल टपल क्रिएट होता है, एंड देन दैट टपल इज रिटर्न. आई रिपीट, मल्टीपल वैल्यूज का एक सिंगल टपल क्रिएट होता है और एक सिंगल टपल रिटर्न होता है. ओके. So this was for that purpose, otherwise this is not required. Then if instead of this, if you want to get the return values in multiple different
variables or different objects. So for example, I got employee number, so I would say en and then comma, name, then comma, salary, then comma, department, and then comma, location. Let's check. ये काम कर रहा है क्या? Let's see. And then I print en, comma, name, comma, cell, comma, department, comma, location. Let's see whether this works. Okay, so that also works. So please see here carefully how it is getting work now. जब हमने पूरे कलेक्शन को रिटर्न किया और कलेक्शन को हमने एक सिंगल वेरिएबल में सिंगल ऑब्जेक्ट में जब हमने एक्सेप्ट किया तो दैट कलेक्शन इज रिटर्न्ड एज अ टपल, ठीक है, एंड दैट टपल गेट्स इनटू दैट सिंगल ऑब्जेक्ट. When you have multiple objects or multiple variables like this, which is possible in Python, so here what happens that the first value is returned into this, second value returned into this, third value returned into this, fourth is into this, fifth into this. बेसिकली जो वैल्यू रिटर्न होगी वो एक टपल ही रिटर्न होगा, लेकिन वो टपल की जो फर्स्ट वैल्यू है वो इसको असाइन हो जाएंगी, सेकेंड वैल्यू इसको असाइन हो जाएंगी, थर्ड वैल्यू इसको असाइन हो जाएंगी, फोर्थ वैल्यू इसको असाइन हो जाएंगी और फिफ्थ वैल्यू इसको असाइन. इफ फॉर सम रीजन जितनी वैल्यूज आ रही है अगर हमने एक वेरिएबल कम दिया तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस. ये लॉक को भी यहाँ से हटाना पड़ेगा. ओके, सो इट सेज दैट कि भाई जितनी वैल्यूज वहां पर अनजिप होके या अनपैक होके मिल रही है आपको, आपने उतने वेरिएबल्स नहीं डाले. So there is an error, okay, or you can say exception. The exception is too many values to unpack. जब अनपैकिंग हो रही है उस टपल की तो अनपैकिंग करने पे 5 वैल्यूज मिल रही है और आपने 4 वेरिएबल्स के नेम दिए. तो नंबर ऑफ वैल्यूज विच आर गेटिंग अनपैक्ड and the number of variables must be same. I repeat, अगर इस तरीके से आप काम करते हो, वैल्यू रिटर्न करके लेते हो, which is possible, which is allowed in Python, कि अगर आप मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न कर रहे हो तो आप एक्सेप्ट करते रहते हो, मतलब कि वैल्यू जो रिटर्न होके आ रही है तो वो टाइम पे आप मल्टीपल डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स में वेरिएबल्स में उसको ले सकते हो. बट द कंडीशन इज व्हाट कि भाई जितनी वैल्यूज आ रही है उतने वेरिएबल्स होना चाहिए. तो अब जब अनपैकिंग होगी यहाँ पर टपल रिटर्न होगा, टपल की अनपैकिंग होगी, उसमें 5 वैल्यूज है तो यहाँ पर 5 वेरिएबल्स होने चाहिए. तो यहाँ पर 4 ही वेरिएबल है तो विल गो फॉर वन मोर वेरिएबल से एल, उसको हम यहाँ पर डिस्प्ले कर देते हैं. Now if I interpret my code, so yes, it is done, it is doing it properly, nicely. अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, अब ये सब अलग अलग वैल्यूज है, ये एक टपल नहीं है. All are from different objects or different variables, and these are the different variables: en, name, cell, department, and l. Okay, are you getting it? Any question into this? Now if you want, then you can have multiple objects, you can work on multiple objects. So for example, I got E1 object, and then I would set the properties, Jameen, 40,000, Mumbai. Okay, Navi Mumbai. And E1 dot. Then जिसकी सैलरी ज्यादा है खाली उसी को डिस्प्ले करो. आई रिपीट, जिस एम्प्लॉय की सैलरी ज्यादा है उस एम्प्लॉय को डिस्प्ले करो. So I would remove this print, and here I would say if E dot cell is greater than E1 dot cell, and then
print e dot get prop else print e1 dot get prop. Okay, so let's see. So fine, you are able to get the employee details whose salary is greater. Then likewise you can have multiple employees जिसको आप value set कर सकते हो, multiple operation perform कर सकते हो. So it's up to us that what all operations we want to perform and how do we handle all those stuff. Any query into this so far? अब तक के इसमें कोई query? Yes, please. No, sir. सर एक सेकंड और मेन फंक्शन बताओ ना सर. सर जैसे ये नंबर दे रहे 1 2 तो इसको 0 1 लिखो तो ये एरर देता है, ऐसा क्यों सर? 1 2 को अगर 0 1 लिखे तो यस सर. नहीं होना चाहिए. इसको मैं 0 बना दूं, इसको 1 बना दूं. नहीं सर, Like this? 2 डिजिट में लिखना है सर. जैसे 2 डिजिट में क्यों लिखेंगे आप? You mean to say ऐसा 0 1? यस सर. तो यहीं पे प्रॉब्लम दे रहा है, बिकॉज दिस इज समथिंग लाइक कि उसको नहीं समझ में आ रहा है ना ये नंबर है कि क्या है. अगर ये स्ट्रिंग है, if you are writing like this, so it is expecting that it is a string. So you write like this then. तो वो स्ट्रिंग बन जाएंगी. ठीक है, 0 1 0 2. But why to have like that? Keep it simple numbers ना. अगर आपको ऐसा रखना है 0 1 0 0 1 0 0 2, देन इधर डिस्प्ले करते टाइम पे आप वैसे डिस्प्ले कर दो या तो फिर इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो. Then suppose if you got multiple employees, what and what suppose into सर आपने ट्रिपल कोट के अंदर ये सारे की सर ये सारे वेरिएबल मतलब की वैल्यू कमेंट एक है या साथ कुछ ले और? सकते हैं यूजर से. एक स्टूडेंट एट अ टाइम प्लीज. आई एम नॉट एबल टू हियर द अंडरस्टैंड. सर वो जो आपने मतलब फंक्शन के अंदर ट्रिपल कोट के अंदर लिखे वो क्या है सर? कमेंट है या कुछ और है? ये जो है ना ये डॉक स्ट्रिंग है ना बच्चा, तुम सुने नहीं? ये डॉक स्ट्रिंग है, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिंग. इसका ही तो पहले एक्सप्लेनेशन हुआ. That gives you the help about that specific method or the class. Now इसके बाद में if I am able to do something like this, I got a list of employees and employee list equals to. सर एक क्वेश्चन था. हाँ बोलो बेटा. सर जैसे ये एक साथ हम लोग जो है सारे वेरिएबल्स की वैल्यू ले सकते हैं क्या यूजर से? हाँ ले सकते हैं ना. ये वाले में इन कॉमा नेम कॉमा सेल कॉमा डिपार्टमेंट. हाँ वो भी ले सकते हैं.
You mean तो to say ऐसा एक ले ही सकते हैं सर? एक ही इनपुट के अंदर ना? That Yes, also you sir. can do. That also you can do. उसके अंदर आपको split method यूज करना पड़ेगा. See all what he is trying to say. Let me show you on terminal. यहाँ पर देखो आप लोग टर्मिनल पे I start my Python and he is saying के जनरली हम लोग क्या करते x equals to input enter data. ठीक है? And then enter data and then whatever data I want to put, I can give the data AIKTC. अब x के अंदर क्या चला गया AIKTC. Likewise, you can give a numerical data, anything, whatever you want to. Fine. Now, I think what he is asking कि अगर multiple inputs लेना हो, for example, enter the 2 data, enter 3 data, something like that. So how that can be done? तो उसके लिए सेम फंडा रहेगा x, y. जितना आप डेटा ले रहे हो, अगर 3 ले रहे हो तो x, y, z, या फिर आप 4 ले रहे हो तो x, y, z, x equals to input. Now the condition is what? क्या same type का data आएगा. That you need to understand. The data would be all string kind of data. फिर बाद में आप उसको convert करना है तो convert कर सकते हो. And then I would say enter data. And then I would split it. Dot split. देखो input और फिर enter data जो हमने ऊपर ही लिखा था उसके आगे मैंने लिखा dot split. And I would split it on the basis of single space. ये single space डाला मैंने. Enter data AIKTC space CO. ठीक है? अब मैं x को डिस्प्ले करता हूँ. I am getting AIKTC और y को डिस्प्ले करता हूँ तो I am getting C. ठीक है? So this is how on a single with a single input statement you can accept multiple data and you can store that multiple data in different variables in different objects. अब यहाँ पर हमने 2 ऑब्जेक्ट में डेटा को स्टोर किया x और y में. फाइन. और कैसे किया हमने? सिंपल आइडिया इसमें क्या है कि भाई एंटर डेटा आपका डिस्प्ले होगा और आप डेटा यहाँ पर डालना शुरू करते हो. अभी हमने ये पूरी लाइन को एज अ स्ट्रिंग लिया एक ही में और स्ट्रिंग लेने के बाद में हमने स्ट्रिंग को स्प्लिट किया. किस पे स्प्लिट किया? उसके स्पेस पे स्प्लिट किया. तो ये स्ट्रिंग में जहाँ पर स्पेस आ गई, बीच में यहाँ पर स्पेस आई, तो ये स्पेस के बेसिस पे हमने उसको स्प्लिट कर दिया. तो एक स्ट्रिंग को हमने 2 स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, स्प्लिट किया. पहली स्ट्रिंग हमने पहले वेरिएबल को x जो पहला वेरिएबल है उसको असाइन कर दी और जो दूसरी स्ट्रिंग है दूसरे वेरिएबल को असाइन कर दी. ठीक है? एंड लाइकवाइज यू कैन गो फॉर मल्टीपल as many as you want. Say x, y, z. मैं 3 नंबर ले रहा हूँ, एंटर नंबर. बट बेसिकली वो जाएगा कैसे? वो जाएगा आपका स्ट्रिंग बन के, आपको उसको बाद में कन्वर्ट करना है. I would say number and enter 10 space 20 space 30. ठीक है? x के अंदर 10, y के अंदर 20 और z के अंदर 30. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड. देखो सिंगल कोट में आ रहा, मतलब ये सब क्या है? आपकी स्ट्रिंग से. फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा. आई वुड से x इक्वल्स टू int of x. डन. फिर मैं x को डिस्प्ले कर दूं. अब ये नंबर बन गया 10 बोलकर. So this way you can typecast it or you can convert it. So the idea is simple. You can make use of dot split. Now dot split or split is a method of a string class. Split is a method of a string class which splits or divides your given string based on this. जो भी आप उसको आर्ग्यूमेंट पास करते हो वो आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे स्प्लिट करता है. ठीक है? यहाँ पर हमने आर्ग्यूमेंट क्या रखा है? यहाँ पर हमने आर्ग्यूमेंट रखा है सिंगल स्पेस. तो सिंगल स्पेस के बेसिस पे वो डिवाइड करता है आपके डेटा को. तो ये पूरी एक स्ट्रिंग बोल के पहले स्कैन हो गई, इनपुट हो गई और फिर इसको 10, 20 और 30 3 में डिवाइड किया गया है क्योंकि यहाँ पर बीच में ये एक स्पेस है और ये एक स्पेस है. तो जो पहला जो पार्ट है 10 वो अलॉट हो गया x को, असाइन हो गया x को, दूसरा 20 y को और जो 30 हो z को. इज दैट क्लियर टू ऑल? Yes, sir.
हाँ, फिर उसके बाद में आपको टाइप कास्टिंग करनी है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। फिर मैं बोल रहा हूँ उसको मत भूलो, नहीं तो सब वो स्ट्रिंग ही रहेंगी बाय डिफॉल्ट। हाँ, कुछ क्वेश्चन? प्रिंट EL0। I'm getting the address. Address. EL0. Let me go this way. These are the objects. No. EL0 dot ename. Okay, so what I'm doing here, I am taking all my objects and putting them into a list. तो यहाँ पर और यहाँ पर आइडिया क्या है कि आई कैन डू द आइट्रेशन, आई कैन डू द लूपिंग। समझो मेरी बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि पहले क्या होता था कि सभी ऑब्जेक्ट्स अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है ये। अब उन ऑब्जेक्ट्स के किसी एट्रीब्यूट को अगर मुझे कंपेयर करना है तो मुझे इस तरीके से अलग अलग लिख लिख के कंपेयर करना पड़ रहा था। फाइन। अब मैं जब उनको सबको एक लिस्ट में अगर डाल देता हूँ तो यहाँ पर मुझे इंडेक्सिंग से मैं काम कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से for I in EL, basically EL, I would say print I dot name, print I dot ename. So now what I've done, I have looped it and let me check. Okay, so as you can see, with that we are able to now iterate into the multiple objects and we can now fetch the values whichever we want to. हमने वो उसमें से नेम को फैच किया और नेम को डिस्प्ले किया। अब हमको अगर कुछ कंपैरिजन भी करना है, जैसे कि 10-12 ऑब्जेक्ट्स है या फिर hundreds of employees are there and you want to iterate into that collection, और आपको किसी स्पेसिफिक चीज के बेसिस पे, सैलरी के बेसिस पे या उनके लोकेशन के बेसिस पे उनको कुछ प्रोसेस करना है, देन दिस वुड कम हैंडी। तो यहाँ पर आप इस तरीके से कर सकते हो। दिस इज नॉट डायरेक्टली इनटू द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, बट दिस आर फ्यू डिफरेंट थिंग्स रिलेटेड टू इट, यहाँ पर तुमको काफी आसान हो जाता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को साथ में हैंडल करना। ओके, जस्ट अ मिनट, प्लीज एक्सक्यूज मी। I will take a break of 2-3 minutes. Please be there. You can check the code. You can try something with that. I'm coming back within 2 minutes. Okay.
Okay. Now here, after putting this, I can remove this. यहाँ पर लिस्ट में डालने के बाद में हम ये कर सकते हैं कि लिस्ट में आइटरेट करेंगे हम और we will say we want to display the employee with the highest salary. For example, I would say salary equals to -1 or salary equals to 0, and then उसकी index IND equals to -1. In this loop, we will say if this salary, if I dot cell is greater than cell, then cell equals to I dot cell, and I need the index, or I would take the object itself. Employee with high salary. Employee with high salary equals to employee object. And here I would say employee underscore HS equals to I. I'm just saying that when you have multiple, when you have more than 2 objects, then how you will be making up the things? आप कैसे find out करेंगे employee with the highest salary? I'm just trying to figure that out. So यहाँ पर we will say employee with highest salary is employee underscore HS dot e name. ठीक है, let's check. Employee with highest salary is this all. अरे ये for loop में डाल दिया. So employee with highest salary is Khatib. Just check whether Khatib is having the highest salary. So yes, Khatib is having the highest salary, and if I make Shamim as 54,000 or 5,54,000, so we have 54,000. Now let us execute our code. And it says employee with highest salary is Shamim. ठीक है? तो this is something like अगर आपके पास multiple objects है और multiple objects के ऊपर आएगा आपको कुछ आइटरेशन करना है, आपको कुछ चेकिंग करना है, कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो व्हाट यू कैन डू, आप सभी ऑब्जेक्ट्स को अपने लिस्ट में ले लो, लिस्ट से पॉपुलेट कर लो ऑब्जेक्ट को, सभी ऑब्जेक्ट्स को लिस्ट में पॉपुलेट कर लो, और फिर इसके बाद में आप अपना लॉजिक यूज करके जिस चीज पे भी आपको काम करना है, आपको सैलरी पे काम करना है या आपको एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट पे काम करना है, यू नीड टू लिस्ट आउट ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, और यू नीड टू लिस्ट आउट all the employees from a specific location. So that also you can do so. वो भी आप कर सकते हो.
Hello, हाँ, sir. I'm getting an error. किसमें इसी कोड में एरर आ रहा है आपको? Not the for loop and this list वाला thing. Sir, मेरे को ऊपर भी error आ रहा था. मेरे को error आ रहा है employee double enter init missing one required positional argument EMP number. आपने init मेथड डिफाइन किया क्या? अभी तक मैंने यहाँ पर डिफाइन किया। अगर आपने Sorry, init sir. मेथड आपने init मेथड डिफाइन किया है, कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है अपने क्लास में? नहीं सर, अभी तक नहीं. तो कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया है तो आपको जब भी आप ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हो, देखो यहाँ पर, तो आपको कोई आर्ग्यूमेंट नहीं पास करना। कहीं ना कहीं आपने कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट एक पास किया होगा, इसके लिए प्रॉब्लम दे रहा है। जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पर देखो जितना भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन है, यहाँ पर कोई मैंने आर्ग्यूमेंट नहीं पास किया। मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को बताया था कि जब किसी भी क्लास में कोई क्लास अगर है तो बाय डिफॉल्ट वो क्लास इनहेरिट होती है ऑब्जेक्ट क्लास से। आई रिपीट, कोई क्लास अगर किसी क्लास से इनहेरिट हुई नहीं है तो बाय डिफॉल्ट वो क्लास इनहेरिट होती है ऑब्जेक्ट क्लास से। और जब भी किसी क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर मेथड ना हो तो उसकी बेस क्लास का उसको कंस्ट्रक्टर मिलता है, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पर एम्प्लॉय एक क्लास है जो कि किसी और क्लास से डिराइव नहीं है, तो उस बाय डिफॉल्ट वो किससे डिराइव हो गई? एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं किया हो तो बाय डिफॉल्ट मुझे एक कंस्ट्रक्टर मिल रहा है फ्रॉम द बेस क्लास विच इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। आई रिपीट, विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। अब मैं अगर कहाँ पर भी कोई आर्ग्यूमेंट लगाता हूँ, तो मैंने यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट लगा दिया, फॉर एग्जाम्पल से 3। नाउ व्हाट वुड हैपन कि द मोमेंट आई so it says me employee takes no arguments। तो जैसा आपको मिला था वैसे ही, क्या भाई आपने अपना कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं किया है, आपको कंस्ट्रक्टर उधार मिल रहा है आपकी बेस क्लास से, ऑब्जेक्ट क्लास से, और वो जो आपको कंस्ट्रक्टर मिल रहा है उसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं वो एक्सेप्ट करता। अब आप यहाँ पर जबरदस्ती एक आर्ग्यूमेंट पास करने की कोशिश कर रहे हो, तो दैट्स अ प्रॉब्लम और दैट्स एन एक्सेप्शन। व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू define your own constructor। I repeat, you need to define your own constructor। ठीक है, तो now we Sir, will I'm be getting an defining। error of missing one required positional argument. हाँ, तो आपका कंस्ट्रक्टर के रिलेटेड ही आपने कोई आर्ग्यूमेंट डाला है ना वहां पर? नहीं सर, मैंने नहीं डाला है. आपके ऊपर नीचे आपने कुछ और मिस्टेक कर दी है, वो स्टेटमेंट के ऊपर नीचे देखो। कैन यू जस्ट सेंड मी द स्नैप? मुझे व्हाट्सएप करो Okay. स्नैप, Okay sir, okay. मैं भी देखता हूँ। व्हाट्सएप कर दो तो मुझे बताओ कि व्हाट्सएप कर दियो। Okay, so this is your class, and here you have the class attributes, then you have the two methods, set prop and get prop. Now apart from these methods, you can also have static method in a class. Now Python के अंदर static method जो है ना वो खाली utility function के लिए यूज होता है। I repeat, they are just used as the utility function। So in Python, static methods are simply used as utility functions। ठीक है, इट मीन्स व्हाट कि पाइथन के अंदर स्टैटिक मेथड्स जो होते हैं वो बेसिकली ना ही आपके किसी स्टैटिक वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए होते हैं, ना ही किसी आपके एट्रीब्यूट को एक्सेस करने। इंस्टेड, इनफैक्ट पाइथन में क्लास में जो स्टैटिक मेथड होता है वो ना ही आपके क्लास के एट्रीब्यूट को एक्सेस कर पाता है, ना ही वो आपके इंस्टेंस एट्रीब्यूट को एक्सेस कर पाता है। वो आपके क्लास के किसी भी एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर सकता। तो क्वेश्चन एक माइंड में यही आएगा, अगर वो एक्सेस नहीं कर सकता किसी एट्रीब्यूट को, तो व्हाई डू वी हैव द स्टैटिक मेथड? तो द स्टैटिक मेथड्स आर सिंपली यूज्ड एज यूटिलिटी फंक्शन। खाली आपको आपकी क्लास को एक एडिशनल यूटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए स्टैटिक मेथड यूज होता है। आई रिपीट, आपकी क्लास को खाली कोई एक एडिशनल
फंक्शनलिटी देने के लिए, एक एडिशनल यूटिलिटी प्रोवाइड करने के लिए स्टैटिक मेथड यूज होते हैं। स्टैटिक मेथड के लिए हम कैसे किसी भी मेथड को स्टैटिक बना सकते हैं? बाय राइटिंग जो भी मेथड है तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल डिफाइन मुझे कोई यूटिलिटी ये चेक करना है कि एम्प्लॉय की ये क्या है, रिटायरमेंट एज क्या है। ओके, so I would say retire or retirement age. This is my function. So simply I would say print employee retirement age is 60 for example. ठीक है, तो दिस इज समथिंग अ वेरी बेसिक यूटिलिटी जो कि मुझे एम्प्लॉय क्लास के साथ में एसोसिएट करनी है। ठीक है, अब ये जो फंक्शन है मेरा, ये जो मेथड है, मुझे ये मेथड को बनाना है स्टैटिक। क्या बनाना है? स्टैटिक बनाना है। स्टैटिक बनाने में आपको करना ये है कि ये जो फंक्शन का डेफिनेशन है, इसके इमीडिएटली पहले आपको डालना है @ स्टैटिक मेथड, @स्टैटिक मेथड। सी केयरफुल, इसको हम कहते हैं डेकोरेटर। ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा डेकोरेटर होते क्या है, बट दिस इज कॉल्ड स्टैटिक मेथड डेकोरेटर। @ डाला हमने और फिर इसके बाद में हमने लिखा स्टैटिक मेथड। तो इससे क्या होगा कि इसके बाद में जो भी फंक्शन आया है, जो भी मेथड आया है, वो मेथड कौन सा मेथड बन जाएगा? स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड की पहली खास बात मैंने क्या बताया था आपको? स्टैटिक मेथड आपकी क्लास के किसी भी एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, इस वजह से भी स्टैटिक मेथड ऐसे मेथड होते हैं जिनका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रेफरेंस नहीं होता। बाकी जितने भी मेथड्स होते क्लास के अंदर, उनके सबके फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं? बाय डिफॉल्ट रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। लेकिन स्टैटिक मेथड में ऐसा नहीं होता, यू डू नॉट नीड एनी रेफरेंस। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सेल्फ लिखना नहीं है, आर्ग्यूमेंट नहीं रहेगा। आप अपनी यूटिलिटी मेथड, आप अपनी स्टैटिक मेथड के हिसाब से, यहाँ पर मुझे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं चाहिए तो मैंने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं रखा। अगर आर्ग्यूमेंट मुझे चाहिए तो मैं आर्ग्यूमेंट यहाँ पर रख सकता हूँ। ठीक है, फर्स्ट आई विल कॉल दिस मेथड विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट। तो अब यहाँ पर हाईएस्ट सैलरी के बाद में मैं स्टैटिक मेथड को यूज करना चाहता हूँ। व्हाट आई विल बी डूइंग, आई वांट टू चेक द रिटायरमेंट एज ऑफ एन एम्प्लॉय, कि भाई ये जो क्लास है, ये क्लास के हिसाब से, ये एम्प्लॉय क्लास के हिसाब से जो रिटायरमेंट एज है वो क्या है। तो मुझे कॉल करना पड़ेगा रिटायर मेथड, और रिटायर मेथड को कॉल करने के लिए मुझे क्लास का नेम यूज करना पड़ेगा, डॉट ऑपरेटर डालना पड़ेगा और फंक्शन का नाम लिखना पड़ेगा। तो फंक्शन का नाम है रिटायर, दैट्स ऑल। अब उसमें डायरेक्टली प्रिंट हो रहा है, सो आई डिड नॉट हैव टू गेट द वैल्यू। लेट्स सी, so as you can see मैसेज हमारा आ गया, एम्प्लॉय रिटायरमेंट एज इज 60। ठीक है, तो दिस आर कॉल्ड स्टैटिक मेथड्स। स्टैटिक मेथड्स का, आई रिपीट, स्टैटिक मेथड का कुछ ऐसा बड़ा यूज नहीं है पाइथन की क्लासेस के अंदर। स्टैटिक मेथड वो मेथड होते हैं जो कि आपके क्लास के किसी भी एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर सकते। इसीलिए स्टैटिक मेथड का जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है वो आपके क्लास के ऑब्जेक्ट का रेफरेंस नहीं होता, तो वहां पर आपको सेल्फ लिखने की जरूरत नहीं है। किसी भी फंक्शन को, किसी भी मेथड को अगर आपको स्टैटिक बनाना है तो उस फंक्शन के, उस मेथड के डेफिनेशन के इमीडिएटली पहले आपको स्टैटिक मेथड लिखना है @ के साथ में। तो दिस इज कॉल्ड डेकोरेटर। कौन सा डेकोरेटर? स्टैटिक मेथड। डेकोरेटर क्या होता है? दैट विल सी लेटर, बट अभी आपको ध्यान में रखना है @ स्टैटिक मेथड। So this will make the function which is immediately after this decorator static method as a static method or as a static function. Okay? और static function के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया कि वो आपके क्लास के किसी एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर सकते, और इसीलिए उनका जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो बाय डिफॉल्ट रेफरेंस नहीं होता, और आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको आर्ग्यूमेंट चाहो तो पास करो, नहीं चाहो तो ना पास करो। फाइन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर मैं कोई आर्ग्यूमेंट लेता हूँ से एज, तो अब मैं यहाँ पर कंपेयर कर सकता हूँ। इफ एज इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60 देन आई वुड से एम्प्लॉय रिटायर्स।
else I can say employee can still work. अभी मैंने आर्ग्यूमेंट यहाँ पर पास करके उसके ऊपर वर्कआउट किया, ठीक है। अभी भी रिटायरमेंट एज 60 है और उसके बेसिस पे हमने यहाँ पर डिस्प्ले किया। तो व्हाट इज एक्सपेक्टेड कि रिटायर मेथड को हम एज पास करें, तो एम्प्लॉय क्लास को हम यूज करेंगे, रिटायर मेथड को कॉल करेंगे और इसका हम एज पास करेंगे, फॉर एग्जांपल 62। So we'll get an answer that employee retires, fine. And if I pass an age of say 42, then I get the output as employee can still work, ठीक है। तो दिस इज समथिंग लाइक अ यूटिलिटी फंक्शन। आपने क्या की, अपनी क्लास को एक यूटिलिटी ऐड कर, कि आपकी जो एम्प्लॉय क्लास है वो बिना अपने स्टेट को चेंज किए, बिना अपने स्टेट को एक्सेस किए, बिना अपने एट्रीब्यूट को एक्सेस किए, वो आपको बता सकते हैं कि भाई रिटायरमेंट एज क्या है एम्प्लॉय की, फाइन। तो फॉर दैट पर्पस यू हैव दिस स्टैटिक मेथड कॉल्ड रिटायर। अब आप चाहो तो आप अपने इम्प्लीमेंटेशन के हिसाब से उसे कोई आर्गुमेंट पास करो, या अगर आपको नहीं पास करना है तो आप कोई आर्गुमेंट ना पास करो उसको। इट्स एंटायरली अप टू योर एप्लीकेशन। So this way we complete the first program of the third experiment, and now I can switch to the second program। और second program में आपको क्या करना है, आपको कंस्ट्रक्टर यूज करना है। तो इसी में हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर ऐड कर देंगे हमारा। So I can say save as exp302। तो 302 ये आ गया। implementing process and objects, implementing constructor। ये हमारी एम्प्लॉय क्लास, और इस एम्प्लॉय क्लास में ऑलरेडी जो चीजें हैं वो एज इट इज रहेंगी, और इनके अलावा अभी हम कंस्ट्रक्टर भी ऐड करेंगे। तो लेट मी ऐड माय कंस्ट्रक्टर ओवर हियर। व्हाट इज द नेम ऑफ अ कंस्ट्रक्टर इन पाइथन क्लास? पाइथन की किसी भी क्लास में कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है? init Dunder init. Dunder init, double underscore init, double underscore, and the first argument is always your reference to an object, जिसका नाम आप सेल्फ, माई सेल्फ, योर सेल्फ, अवर सेल्फ, सबका सेल्फ, जो भी नाम रखना चाहो आप रख सकते हो। इट शुड बी वैलिड, दैट्स ऑल। बट दिस इज अ प्रैक्टिस, दिस इज अ कन्वेंशन टू कॉल इट सेल्फ, so I am calling it self। देन इसके बाद में अगर आप चाहो तो जैसे भी आपको आर्ग्यूमेंट लगते हैं वैसे आप आर्ग्यूमेंट डाल सकते हो। यू कैन हैव वेरिंग लेंथ आर्ग्यूमेंट आल्सो, एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन हैव द आर्ग्यूमेंट्स। सो मैं चाहूँ तो यहाँ पर फिर नाम ले लूँ, फिर से वो सब चीजें रखनी पड़ेंगी। कंट्रोल सी, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ कंट्रोल वी, और सबको मैं डिफॉल्ट वैल्यू कुछ दे देता हूँ, और सबको डिफॉल्ट वैल्यू मैं नन ही देता हूँ। तो अगर कुछ वैल्यू पास हुई तो ठीक है, और वैल्यू पास नहीं हुई तो इट इज नन। तो दैट्स अ बेटर प्रैक्टिस। तो नाउ द आइडिया इज व्हाट, कि ये जो हमारा कंस्ट्रक्टर है, ये कंस्ट्रक्टर 0 आर्ग्यूमेंट भी एक्सेप्ट करेगा, 1 आर्ग्यूमेंट भी एक्सेप्ट करेगा, 2 आर्ग्यूमेंट भी एक्सेप्ट करेगा, 3 आर्ग्यूमेंट भी एक्सेप्ट करेगा, 4 आर्ग्यूमेंट भी एक्सेप्ट करेगा, और 5 आर्ग्यूमेंट, 6 आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो 0 से लेके 5 तक कितने भी आर्ग्यूमेंट हमारा फंक्शन एक्सेप्ट कर सकता है। ऑब्वियसली वो सीक्वेंस में ही आएगा, ऑब्वियसली सीक्वेंस में ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने वहां पर पास किया 5 से 2000, अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5 जो है वो
एम्प्लॉय नंबर में चला जाए और जो 2000 है वो आपके सैलरी में चला जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, सीक्वेंस में जाएगा, जो 2000 है और नेम में जाएगा। अगर आपको 2000 सैलरी में डालना है तो आपको नेम के साथ में स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो नाउ हियर आई कैन डू दिस सेम थिंग। So now I got a constructor in my class, and I should be able to a situation like initializing this with say 10 और E2 को मैं सेट टॉप नहीं करता। That's it. Okay, so employee with higher salary Shamil, what's happening? थोड़ा सा हमको ये सब सर आपने 301 ये किया। क्या चीजें सर EXP 301 रन किया आपने, 302 नहीं किया। नहीं, लेकिन इसका भी मुझे डिस्प्ले चेंज करना पड़ता है, इसमें भी वैसी डिस्प्ले होगा। It is fine. Not supported between instances of norm type and int. क्या भाई? अच्छा, सैलरी वहां पर डिफाइन नहीं है। So what I need to do, I can set the value here itself. Then we'll see. Okay. So employee with high salary Shami. वो निकाल देते because I want to work on constructors ना। And here I would say print y in EL blend I dot get go. Okay, let's see this. ओके, तो तीनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू यहाँ पर डिस्प्ले हो गई। द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज विद एम्प्लॉय नंबर 1 एंड देन सेकंड इज विद 2 एंड थर्ड इज विद 10। अभी आप लोग अगर गौर से देखें तो ये जो थर्ड ऑब्जेक्ट है हमारा लिस्ट में, दैट इज E2। तो E2 को देखो, हमने एट द टाइम ऑफ क्रिएशन हमने उसको सेट किया, उसे हमने इनिशियलाइज किया। तो जब हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया उसी टाइम पे हमने इनिशियलाइज कर दिया बाय सेंडिंग द वैल्यूज। अब अगर मैं यहाँ पर नवी मुंबई निकाल दूं और वैल्यू ना सेट करूं या ना सेंड करूं, तो वहां पर जो नन है वो उसको सेट हो जाएगा। तो जो नवी मुंबई है वो थर्ड में नहीं दिखेगा। So as we can see, none is displayed over here. It is not Navi Mumbai. Fine, because now we are able to avoid the passing of the last argument. Last argument हमने पास नहीं किया। अब हम क्या करते कि let's try कि मैं अगर सेकेंड आर्ग्यूमेंट ना पास करूं तो क्या होता है यहाँ पर? सेव नहीं किया।
So see here, the first is my employee number जो 5,000 जो 50,000 था, which I was about to pass as a salary, तो वो नेम पे आ गया, और जो नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट था हमारा डिपार्टमेंट, वो फिर सैलरी पे आ गया, और आगे नन नन सेट हो गया. फाइन. So what I need to do, I need to say that by this 50,000 is salary, not a name. So let me do like this. I would say cell equals to 50,000. Then here I कॉमा say डाल देगा तो ऐसा कॉमा खाली सर खाली छोड़ के. समझा मैं. और दिस इज माय डिपार्टमेंट. सो डिपार्टमेंट इक्वल्स टू कंप्यूटर टेस्टिंग. लेट्स डू दिस वे. नाउ सी हियर, तो 10 जो है वो हमारा एम्प्लॉय नंबर, फिर नेम पे नन हो गया, सैलरी पे 50,000 सेट हो गया, और हमारा डिपार्टमेंट पे कंप्यूटर टेस्टिंग सेट हो गया, और लोकेशन पे नन सेट हो. ठीक है. तो दिस वे यू कैन हैंडल इट. व्हाट ही वाज सेइंग कि कॉमा कॉमा डाल के ऐसे ही छोड़ दो, दैट विल नॉट वर्क. कुछ वैल्यू तो आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी ना आपको, या तो समथिंग लाइक एन एम्प्टी स्ट्रिंग, और यू शुड से नन, कुछ तो आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा. देखो आपको बताता हूँ, आप बोल रहे हो ऐसा कर, और फिर डिपार्टमेंट के बाद में यहाँ पर भी ऐसे कर दें. इट्स एन एरर. यू नीड टू स्पेसिफाई समथिंग ना. आपने कॉमा दिया है ना, तो आप कुछ तो यहाँ पर लिखो, नन लिखो, या आप कांस्टेंट स्ट्रिंग दो. यहाँ पर भी आपने कॉमा दिया है, तो यहाँ पर भी आप नन लिखो, या एक एम्प्टी स्ट्रिंग दो. यू नीड टू हैव समथिंग. ये नन के पैरेलल दे देता हूँ. हाँ, पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के बाद में आप ऐसे नहीं कर सकते. ओके, गेटिंग इट. अच्छा, और दूसरी बात, जब आप पोजिशनल आर्ग्यूमेंट स्टार्ट करो, जैसे कि आपने सैलरी लिखा, फिर डिपार्टमेंट लिखा, फिर उसके बाद में कॉमा डाल के सोचो कि आप ऐसी कोई वैल्यू दे देते हो, से पुणे, तो दिस विल नॉट वर्क. आपने एक बार नेम स्पेसिफाई किया ना डालना, तो आपको फिर नेम डालना है. दैट विल नॉट वर्क. पोजिशनल आर्ग्यूमेंट फॉलोज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट. फाइन. तो दिस इज कॉल्ड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट. तो अभी यहाँ पर आपको इसका कीवर्ड डालना पड़ेगा. इसका कीवर्ड क्या है? लॉग इक्वल्स टू. नाउ दिस विल वर्क. गेटिंग इट? So this is how it works. Any query? Any question? ये अभी हमने हैंडल किया यूजिंग कंस्ट्रक्टर. तो ये सब डेटा टपल के फॉर्म में सेव हो गए? नहीं, अगर आप रिटर्न करो मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स फॉर एनी फंक्शन, तो वो टपल के फॉर्म में रिटर्न होता है. ये सब का सब कुछ तो ही ना टपल बोल के सेव होगा. ये तो ऑब्जेक्ट के एक एक एट्रीब्यूट है. ये 10 is one attribute of my object E2. Likewise, this name is another attribute of my object E2. So these are not tuples. These are the object of the employee class. Employee हमारी क्लास है ना एक. अभी अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूँ, भाई इसके साथ में ना इनके क्या क्लास है ये भी हमको बता. तो कॉमा टाइप ऑफ आई का टाइप बताओ. सो ऑल आर ऑफ टाइप एम्प्लॉय. सभी एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट्स है. ठीक है, टपल के लिए ऑब्जेक्ट्स नहीं. भले वो यहाँ पर टपल बोल के आपको शो कर रहा है. क्यों आपको टपल बोल के शो कर रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर गेट प्रॉप मेथड कॉल किया है, और गेट प्रॉप मेथड से मल्टीपल वैल्यूज आप रिटर्न कर. ये हमने पहले अभी थोड़ी टाइम पहले डिस्कशन किया ना पूरा. गेट प्रॉप से आप मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करते हो. ये अब ये मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करता है ना कोई भी फंक्शन, जब भी वो मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करेगा तो आपको मल्टीपल वैल्यूज का एक सिंगल टपल क्रिएट करेगा, आपको टपल रिटर्न करेगा. ठीक है. अब हमने क्या किया, प्रिंट के अंदर डायरेक्टली उसी को डिस्प्ले कर. हमने प्रिंट मेथड के अंदर डायरेक्टली उसका जो रिटर्न वैल्यू आई, जो उसका हमको रिजल्ट मिला गेट प्रॉप का, उसी को हमने डिस्प्ले कर दिया.
That's why it is getting displayed as a tuple. इसीलिए वो एक टपल की तरह यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है. Are you getting it? और हमने इसको अनपैक भी किया था. मैंने आपको इंटरप्रेटर पे बताया था x equals to y equals to fine. So that way also you can do. तो ये मैंने यहाँ पर शॉर्टकट लगाया हूँ पूरा एक ऑब्जेक्ट डिस्प्ले करने का. आप जब उसको डिस्प्ले करें तो आप अच्छे से अपना प्रेजेंटेशन को आप एम्प्लॉय नंबर जो हमने मॉर्निंग में देखा था, एम्प्लॉय नंबर एक लाइन में, एम्प्लॉय नेम एक लाइन में, एम्प्लॉय सैलरी, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय लोकेशन. ओके, तो इस तरीके से आप डिस्प्ले करो. ये तो मैंने थोड़ा शॉर्टकट मारा होता कि एक लाइन में आउटपुट आ जाए. अभी यहीं पे अगर आपको डिस्प्ले जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे अगर करना है तो दैट यू कैन डू हियर इटसेल्फ ना. एग्जांपल प्रिंट एम्प्लॉय नंबर. अब यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर किसमें है, i.emp नंबर. फाइन, मैं कर देता हूँ कमेंट. अब यहाँ पर सभी ऑब्जेक्ट्स का खाली एम्प्लॉय नंबर डिस्प्ले. ठीक है, सभी ऑब्जेक्ट्स के खाली एम्प्लॉय नंबर डिस्प्ले. फाइन. अभी आप चाहो तो पहले एम्प्लॉय नंबर के बाद एम्प्लॉय नेम, उसके बाद में एम्प्लॉय इसी का एम्प्लॉय 1 का एम्प्लॉय नंबर 1 का ही नेम भी सब डिस्प्ले करो. तो देयर यू कैन डू हियर. या तो एक और प्रिंटफ लगा दो या उसी प्रिंट में करो प्रिंट एम्प्लॉय नेम आई डॉट ई नेम. अब सभी एम्प्लॉयज की दो चीजें डिस्प्ले होंगी यहाँ पर. फिर सब टू सर रिटर्न में एफ स्ट्रिंग लगा के भी कर सकते हैं ना? कर सकते बेटा, वैसे भी कर सकते हैं. पॉसिबिलिटीज बहुत है पाइथन के अंदर. आप खुद उसके अंदर थोड़ा बहुत R&D कर करके डिस्प्ले कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं. तो देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज. एक ही काम को करने के कई तरीके भी मिल जाते हैं. तो यू कैन डू ऑल दो स्टफ. अभी ये प्रोग्राम के अंदर इंपॉर्टेंट ये है कि यू शुड अंडरस्टैंड द इनिट मेथड और द इनिट फंक्शन और द कंस्ट्रक्टर. ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, उसी इनिट मेथड को यूज किया यहाँ पर विदाउट आर्ग्यूमेंट, यहाँ पर भी विदाउट आर्ग्यूमेंट, और यहाँ पर हमने विद आर्ग्यूमेंट उसको यूज किया. व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई ये तीनों ही टाइम पे वो सिंगल मेथड ही कॉल हो रहा है. तीनों टाइम पे वो सिंगल मेथड ही कॉल हो रहा है. ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर यहाँ पर तो एक ही बार डिस्प्ले हो रहा है, तो एक ही बार कॉल हो रहा है, एक ही बार नहीं कॉल हो रहा है, तो व्हाट वी कैन डू, I can put up one simple print inside this, and I can say constructor called or constructor executed. देखो कितनी बार वो डिस्प्ले होगा मैसेज, कितनी बार डिस्प्ले होगा मैसेज. यस, तो मैसेज कितनी बार डिस्प्ले होगा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूटेड. 3 टाइम्स होगा सर. व्हाई सर क्योंकि हम लोग 3 अलग अलग हम लोग ने ऑब्जेक्ट बनाए हैं. ऑब्जेक्ट हमने लिखे इसके लिए सिंपल आंसर. constructor executed, constructor executed, constructor executed, because you have created 3 objects. 2 objects without argument, एक object with argument. So I go to my main method. This is the first time, this is the second time, and this is the third time. ठीक है, तो थर्ड टाइम में तो हमने सभी आर्ग्यूमेंट उसको पास कर, कुछ नन वैल्यूज भी रखी, बट थर्ड टाइम में हमने उसको आर्ग्यूमेंट पास किया है. सेकेंड टाइम में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, और फर्स्ट टाइम में तो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं. ठीक है, तो दिस वे वी हैव क्रिएटेड 3 ऑब्जेक्ट्स. So 3 times the constructor is called, and that's why this message is displayed 3 times. Constructor executed, and constructor executed. सर ये
जिसके अंदर आर्गुमेंट पास हुआ है उसमें ये नन लिखना नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा ना? ये हाँ, इसके हाँ, अंदर अभी नहीं भी लिखेंगे तो चले, लेकिन आपको यहाँ पर बीच में कुछ रखना, यू कैन अवॉइड इट, इट मीन्स वन एंड द सेम। ठीक है, सब आ रहा है। एम्प्लॉय नेम देखो नन आ गया वहाँ पर, क्योंकि हमने कुछ पास ही नहीं किया थर्ड वाले से, नेम नहीं पास किया, आई मीन टू से। एम्प्लॉय नंबर हमने पास किया था 10, सैलरी हमने पास की, डिपार्टमेंट हमने पास किया। And this also should work now. सचिन की सैलरी कर देते 60,000। So employee with highest salary is Sachin. Okay, so that is also working. Employee can still work, and then employee number, जो डेटा हम डिस्प्ले कर रहे हैं वो सब चीजें आ रही हैं। Okay, so this is your program experiment 302.py, which is about the second part of your third experiment. इसमें किसी को भी कुछ डाउट है? Is there any doubt? Yes, please. No, sir. अच्छा चलो, इसमें एक और काम करते हैं। तो व्हाट आई डू कि ये जो इनिट मेथड है ना, इसको लास्ट में मैं एक पास करता हूँ से ओबीजे, एक ऑब्जेक्ट पास करता हूँ, और इसको भी रखता हूँ नन, एंड here I would say if obj is none, then do all this stuff. Else I would say self equals to obj. देखो क्या हो रहा है। तो what I am saying, एक लास्ट में मैं एक और आर्ग्यूमेंट ऐड किया हूँ, obj equals to none, and I am saying if obj is none, then only put up all these values, else self equals to obj. So now let us create one object E3 for the employee of employee, sorry, and here I would say obj equals to E1 or E. obj equals to E. Let's see whether this works or not. And इसको खाली मुझे एक बार डिस्प्ले करके देखना है। तो मैं क्या करता हूँ, ये सब चीजें अपनी कर देता हूँ कमेंट। I only want to work with this. और ये जो है इसको हम कर देंगे डिस्प्ले, प्रिंट e3 डॉट गेट ब्लॉक। See what's happening? None, 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 none.
These are the none. And I got my object with all none values. E3 equals to employee, obj equals to E. And obj equals to none. OBJ is none, then आया लेना पड़ेगा। So here I'm getting it 1. यहाँ पर क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा है? I need to do this way. I think. Control C. OBJ dot AMP number, then OBJ dot ename, OBJ dot cell, OBJ dot department, and OBJ dot lock. और इसे हटा देना, इसे भी हटा देना। Okay, so now it is getting displayed. So can you tell me what's happening now? What I did? अभी तो आप लोगों ने फटाफट बता देना चाहिए मुझे। What we did over here? क्या किया हमने यहाँ पर? क्या किया है हमने यहाँ पर? E3 equals to employee, OBJ equals to E. What does it mean? तो इसके अंदर जो आर्ग्यूमेंट डाले उसके अंदर ई की सारी वैल्यूज ली है So E3 के basically अंदर। it is something like a copy constructor. आपने पढ़ा है ना जावा में C++ में copy constructor. What does the copy constructor do? It copies one object into another object. That's what we are doing over here. ठीक है, हमने वही काम यहाँ पर भी किया। तो हमारा एक सिंगल कंस्ट्रक्टर है, लेकिन ये सिंगल कंस्ट्रक्टर किसके लिए कैपेबल है? अगर आप चाहो तो कोई वैल्यू इसको पास ना करो, अगर आप चाहो तो इसको वैल्यू पास करो, और यहाँ पर वैल्यू पास करने के बाद में आप चाहो तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी पास करो। जब आप ऑब्जेक्ट पास करते हो तो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज वो क्या करता है, आपके न्यूली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट के अंदर वो सब वैल्यूज को सेट कर देता है। तो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग इन ऑल द सिनेरियो। सभी सिनेरियो में ये काम कर रहा है आपका। Is that clear to all? यस सर। Okay, fine. इसमें कोई query? So here now we complete the 2 programs of the experiment. And let me stop the